Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 24 of the course Object Oriented Programming. In the previous lecture, we have seen efficient string class and we have resolved the problem while deleting the string objects. That is, we have to check if any other string object is pointing to that character array or not. If we want to delete a string object or assign one string array of character to another array of characters. For example, we have a string object that is pointing to array of character and we want that other string object also point to that array of character. Then before assigning that address to the other string object, we have to check that the other string object, if it is pointing to another array, we have to first delete that array. And before deleting that array, we have to check that any other string object is pointing to that array or not. For example, if S1 is pointing to hello world array and S2 is pointing to good morning array, and we want that S2 also points to hello world array, then before assigning the address to the S2 so that it points to hello world, we have to check that S2 that is currently pointing to good morning array, that is any other object, for example S3 pointing to good morning array or not. If अगर वहाँ पर S3 कोई object है जो कि good morning array को point कर रहा है, then we won't delete good morning array. Otherwise, अगर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, S2 ही स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट है that is pointing to that good morning array, then we will first delete that good morning array from the memory, and then we assign the address that is contained by S1 string to S2, so that S2 string also points to hello world string, right? And then we have seen dynamic type information, that how we can get the type of the object during the execution of the program. And we have seen the dynamic cast operator, and in order to get the dynamic type information, we must have the hierarchy of classes. That is, we have a base class and we have derived classes that are derived from that base class. Dynamic cast operator is used to obtain two kind of information. First, it check the class type, that is, it try to convert this p unknown pointer, ठीक है, इसको convert करने की कोशिश करेगा drive1 class में and assign it to the p drive pointer. And we can check this thing in the if condition. If it successfully convert p unknown pointer to drive1 object, then it will return 1. और कब ये सक्सेसफुली रिटर्न करेगा? अगर p अननोन ऑब्जेक्ट पॉइंटर जो है वो एक ऐसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे DERV1 टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, तब वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाएगा. अगर वहाँ पर DERV2 या DERV3 ड्राइव 2 या ड्राइव 3 या ड्राइव 4 क्लास का ऑब्जेक्ट है, तब वो उसे सक्सेसफुली कन्वर्ट नहीं करेगा और उस सूरत में आपके पास p ड्राइव में 1 नहीं आएगा, 0 वैल्यू आएगी, राइट? सो इस तरह से आप क्लास की टाइप चेक कर सकते हैं. is drive1, द फंक्शन नेम कुड बी is DERV1, कि आप चेक कर रहे हैं इसमें कि मैं जिसको पॉइंटर पास कर रहा हूँ इस फंक्शन को, इफ दैट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास drive1 और नॉट, राइट? सो यू कैन हैव दिस स्टेटमेंट जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है स्लाइड में, p drive1 that is a pointer of type drive1. That means this pointer only points to the object, to the memory location where you can store or where you can have the object of drive1 class. And then we have a dynamic cast operator that try to convert this p unknown pointer. ये जो p unknown pointer है इसकी टाइप बेस टाइप की होगी, ठीक है, ये बेस टाइप का पॉइंटर है. And then it try to convert that pointer into drive1 object and assign the address to p drive1. और कब ये पॉसिबल होगा कि सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लेगा? इफ p unknown is pointing to the memory location where we have a drive1 object, right? And then we can use the same operator by changing the type of the pointer. So in that equation, the same equation is used to change the type of the pointer. For example, p unknown pointer को आपने drive1 में change कर लिया. Now the p drive1 operator p drive1 जो हमारे पास पॉइंटर है, that pointer points to the same memory location जिसको p unknown
पॉइंटर पॉइंट कर रहा है मेमोरी में, ठीक है। बट अगर p अननोन पॉइंटर बेस टाइप का पॉइंटर है और वो मेमोरी को, जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वहाँ पर हमारे पास ड्राइव 1 का ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो p अननोन पॉइंटर जो है सिर्फ और सिर्फ बेस पार्ट एक्सेस कर सकता है उस ऑब्जेक्ट का. दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर. बट if we access the same memory location using p drive 1 object, p drive 1 pointer जिसकी टाइप जो है drv1 है, drive 1 है, अगर हम इस पॉइंटर के थ्रू इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेंगे then we can read all the information of that object. So dynamic cast operator, that is used to dynamically check the type of the class, right, and we can change the type of the pointer as well using dynamic cast operator. Then the other thing that we have seen in the dynamic type information is type ID operator. For example, we can actually get the name of the class name of the object. हम क्लास नेम ऑब्जेक्ट का गेट कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इसका ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, इसका क्या क्लास नेम है. वी कैन प्रिंट दैट नेम ऑन द स्क्रीन यूजिंग द टाइप आईडी ऑपरेटर, एंड वी विल फाइंड मोर थिंग्स यूजिंग द टाइप आईडी ऑपरेटर व्हेन वी आर इन आईओ स्ट्रीम फाइल स्ट्रीम चैप्टर. ठीक है, जब हम फाइल स्ट्रीमिंग को देखेंगे, फाइल्स को देखेंगे, तब हम इस ऑपरेटर को शायद मजीद यूज़ करेंगे टाइप आईडी को. राइट, सो दिस इज द प्रीवियस लेक्चर. In today's lecture, first we will see the example programs. We will first see the two example program. Problem statement देखेंगे. We will try to understand that problem statement, and then we will start writing the code and that fulfill all the requirements of the problem statement. The first problem is about the publication company. एक publication company है जो कि book भी publish करती है और audio tapes भी publish करती है, right? And they want to store some information, और इसमें हम इसकी problem statement को पहले देखेंगे and then we will try to write the program for that. And then the second example program is about the distance program, where we write the friend function, जो कि ऑपरेटर स्टैटिक एक फ्रेंड फंक्शन लिखेंगे जो कि दो डिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई करेगा. एंड देन if we get time we will see the generic programming, introduction to generic programming, and in C we use template for generic programming, right? So now let's come to the example program 1. Now this is the problem statement. हम step by step problem statement को देखेंगे. We try to understand that statement. उसके बाद हम program लिखेंगे इसका. So imagine the publication company that markets both books and audio cassettes version of its work. So दो तरह के publication company publish करती है material को, एक books की सूरत में and the other form is the audio cassette version. So what we have to do is we have to create a class publication where the private data member is the title of the publication and the price. ठीक है, इसका टाइटल पब्लिकेशन का ये है, बुक का नाम फॉर एग्जांपल, या ऑडियो कैसेट का टाइटल, और इसकी प्राइस या व्हाट इज द प्राइस. प्राइस इज इन फ्लोटिंग पॉइंट. ठीक है, सो एक इसमें स्ट्रिंग आ जाएगा हमारे पास, ये टाइटल दैट कुड बी अ कैरेक्टर अरे एंड दिस कुड बी अ फ्लोटिंग पॉइंट. ड्राइव टू क्लासेस, बुक and the other one is the tape. So book classes which adds a page count type int, and tape class which adds a playing time in minutes. So book जो class है उसका specialized जो data member है that is the page count, कि उस book के कितने number of pages है, and the tape का जो specialized data member है that is playing time, उसका duration कितना है, 60 minutes है, 40 minutes है. So that is the floating point value. और page count है that is integer value obviously. So एक publication class हो जाएगी हमारी, और दो से हम drive classes करेंगे. drive classes बनाएंगे एक book और एक tape. Each of the three class should have a get data function to get its data from the user at keyboard, and put data function to display the data. So put data will put the data on the screen, and get data will ask the user to input the data about that particular object, right, during the execution of the program. So ये तीनों functions, दोनों functions तीनों classes में होने चाहिए. That is one requirement.
Then we write a main function that creates an array of pointers to publications. So publication class type की हम array of pointer बनाएंगे because publication is the base class, उससे दो classes drive हो रही है. Then we create an object of book or tape and assign the address of that object to this array of pointer. Array of pointer जो publication type की है उसको assign करते जाएंगे हम वो address, right? So then we have a loop in main that asks the user about a book or a tape and use a new to create an object of type book or tape. So हमारे पास एक loop होगा जिसमें हम पूछेंगे एक user से कि आपने tape का data input करना है या whether you want to input the data about the book, right? And if the user says I want to enter the book data, then we create a book object and assign the address of that object to the array of pointer of type publication, right? And new operator is used to dynamically allocate memory for the book object, and if the user says that he want to enter the tape data, then accordingly tape object will be created dynamically using new operator and the address will be assigned to the array of pointer to publications. ठीक है, so इस तरह से काउंट भी होता जाएगा कितने records enter कर लिए हैं, and then we will display those records. So when the user has finished entering the data, display the resulting data using a for loop and a single statement such as this one. So ये single statement use होगी PUBARR is the publication array, ठीक है. So ये single statement use हो रही है put data. Now it will check कि put data function जो है किस object के साथ कॉल, और pointer अगर बुक के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो पुट डाटा बुक ऑब्जेक्ट का एग्जीक्यूट होगा. पॉइंटर अगर पॉइंट कर रहा है पब्लिकेशन पॉइंटर, अगर पब्लिकेशन अरे में जो एड्रेस है jth इंडेक्स पे अगर वो पॉइंट कर रहा है एक टेप ऑब्जेक्ट को, देन द पुट डाटा फंक्शन ऑफ द टेप क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट. सो मकसद क्या है कि एक सिंगल स्टेटमेंट होगी टू डिस्प्ले दोज डाटा ऑन द स्क्रीन, राइट. और सिंगल स्टेटमेंट ही यूज होगी to ask the user to input the data for these two classes, ठीक है. इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए डाटा इनपुट किया जाए उसके लिए भी get data statements ही यूज की जाएगी. So we have to make a polymorphic behavior in the publication class, ठीक है. उसका behavior polymorphic होगा, that means we must have a virtual function in that class. Okay, now let's go and write the program. First of all, we will write include preprocessor and using name space std. Okay, now we have a class publication. Okay, the private data member of the publication are character, title, let's say it is of 30 bytes, and the other thing is the price of the publication, that is a floating point value price. Then we have a public function void get data okay, cout, enter title, cin title, and the other thing that we want to input is the price, cout, enter price, cin price. So get data function हमने बना लिया जो कि दो values input लेगा user से, title and price. Then we have a put data function. Return type of both the function are void. Sorry, I forgot to put these two brackets. Put data
cout title is equal to title end line, and cout price is equal to price end line. So दो functions बन गए publication class पे. Now we have the other class is a book class that is derived from the publication class. Book class derived from the publication class. Okay. Two private data members of the book class, the one private data member of the book class is basically number of pages, that is integer pages. Public functions are, because all the three classes must have get data and put data function. Okay, so public functions are void get data, cout, so यहाँ पर हम पेजेस के लिए कहेंगे मैसेज डिस्प्ले करेंगे एंटर नंबर ऑफ पेजेस in pages, and that's it. And the other function that we want in this class is put data, cout. So we have to display the pages, right? Pages end line, and the other class that we, the third class is the tape class. Let's name it audio cassette, that is tape. Publication and the private data member of that tape class is duration. tape की duration कितनी है, 60 minutes है, 60.5 minutes है. And the public function are void get data, so we have to display the message first using cout, enter duration, then in, और duration जो इसका प्राइवेट डेटा मेंबर है उसमें इनपुट ले लेंगे. The other function that is required is void put data, and that function is used to display the value of the private data member on the screen. Cout is used to display duration end line. So we write three classes, तीन classes का कोड हमने लिख ली है. Then we have to write a main function, और main function में we have to create an array of pointer of type publication. और यूजर से हम रन टाइम में पूछते जाएंगे कि आपने डाटा जो एंटर करना है बुक का करना है या टेप का डाटा एंटर करना है, right? And then we create an object of book or tape using a new operator and assign that
एड्रेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और मेमोरी लोकेशन जिस पे वो ऑब्जेक्ट है, बुक या टाइप क्लास का, उसको अरे ऑफ पॉइंटर जो पब्लिकेशन टाइप के उसको असाइन कर देंगे। एंड देन वी हैव अ सिंगल स्टेटमेंट अरे ऑफ पॉइंटर एरो ऑपरेटर गेट डाटा। और उसके बाद जब हमने यूज़र से गेट डाटा इनपुट कर लिया, यूज़र ने जितने भी ऑब्जेक्ट्स इनपुट डाटा करना था, उसके बाद we have to display, right, we have to display the content of all the objects on the memory using put data function, ठीक है। So सबसे पहले हमारे पास एक array of pointer है, publication static ptr, इसका साइज है लेट्स से 10 साइज ले लेते हैं, integer n, okay, and choice is equal to y, because यूजर से पूछेंगे do you want to enter another record, if yes press y, otherwise press no, n, right। so ये उसके लिए हमने रख लिया। you have a do while loop, while की कंडीशन होगी that is choice is equal to small y और choice is equal to capital Y। it is possible that user जो है वो capital Y भी input कर सकता है। and then we have a semicolon। अच्छा, while लूप की बॉडी में जो चीज़ आएगी दैट इज़ सबसे पहले हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे सी आउट एंटर बुक और टेप रिकॉर्ड बी और टी। सी इन, we need another character choice 1, let's say, so choice 1 एक और character हमने ले लिया, इसमें यूजर वैल्यू इनपुट करेगा, ठीक है। that value could be b or t, right, and then we have to create an object accordingly। अगर वैल्यू b है then we have to create a book object, if that value is t then we have to create a tape object। so then here we can write if statement, if choice 1 is equal to capital B और choice 1 is equal to small b, because यूजर कैपिटल B भी इनपुट कर सकता है और स्मॉल b भी इनपुट कर सकता है, राइट। if that is the situation then ptr का जो काउंट की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करते हैं, 0th इंडेक्स पे न्यू बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, एल्स इफ choice 1 is equal to capital T or small t, then it will create a tape object। सेम स्टेटमेंट यूज होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। एल्स में मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, प्लीज एंटर correct choice end line, and then system pause continue। so continue statement क्या करेगा, वो लूप को दोबारा से शुरू कर देगा, it will bring the control at the beginning of the loop and start executing it। so let's see if that do the same thing that we think or not, ठीक है। देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या वाकई ही लूप को शुरू से शुरू कर देती है विदाउट एग्जीक्यूटिंग द फर्दर स्टेटमेंट और नॉट। ओके, सो यूजर ने इनपुट कर दिया b या t, ठीक है।
सो उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। कहाँ पर, उसका एड्रेस कहाँ पर असाइन कर दिया, पीटीआर अरे के 0th इंडेक्स पे उसका एड्रेस असाइन कर दिया। नाउ वी हैव अ स्टेटमेंट पीटीआर काउंट एरो। Okay, now we can call the function get data, right? उसके बाद हम count को increment कर देंगे, count plus plus, and then we display the message that if you want to enter another record or not. ठीक है, so see out, do you want to add another record y/n सी इन। सो चॉइस में हम इनपुट ले लेंगे, ठीक है, देन उसको चेक कर लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद जब लूप एग्जिट हो जाएगा देन वी हैव अ फॉर लूप n is equal to 0, n is less than count n plus plus। अब हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूजर 3 या 4 रिकॉर्ड एंटर कर लेता है, 2 बुक के 2 टेप के या 2 बुक के 1 टेप का, वट एवर। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम ऐसे ही करेंगे, 1-2 रिकॉर्ड्स बुक के और 1-2 रिकॉर्ड्स टेप के एंटर करेंगे। उसके बाद ये जो लूप है दैट इज यूज टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स। सी आउट, नो वी जस्ट सिंपली कॉल द फंक्शन, राइट? सो ptr n is equal to, not equal to, arrow operator put data। पुट डेटा फंक्शन उसी ऑब्जेक्ट का कॉल होगा जिसको ptr अरे के nth इंडेक्स पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा उसी टाइप का पुट डेटा फंक्शन कॉल होगा, राइट? देन वी हैव अ सिस्टम pause, right? Okay, so now let's compile the program first. Okay, so expected class name before token, cannot convert tape to publication। so publication और यहाँ पर वापस publications है, इसको s को ख़त्म कर देते हैं, that is the mistake over here। okay, now everything seems perfectly fine, there is no compiler error, so let's execute this program। okay, let me change the screen size। so it display the message enter book or tape record। let's say we enter B, it is enter title, let us see, enter price, price is let's say 500। now display the message do you want to add another record। सो यहाँ पर एक छोटी सी एक मिस्टेक नज़र आ रही है, या इसको हमने बुक का रिकॉर्ड एंटर करना था, वी एंटर बी, सो इट आस्क फॉर द टाइटल, प्राइस, परफेक्टली फाइन, देन इट शुड आस्क फॉर द पेजेस, राइट? ये बुक के पेजेस भी तो थे ना प्राइवेट डाटा मेंबर, इट शुड डिस्प्ले दैट मैसेज बट इट वोंट, राइट? ओके, वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इफ आई से यस, टेप का रिकॉर्ड एंटर करते हैं हम, enter title of tape is C++, programming, price is 450.7574। सो टेप पे भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि टेप का भी जब हम रिकॉर्ड एंटर करते हैं इट वोंट आस्क फॉर द ड्यूरेशन। तो यहाँ पर ड्यूरेशन का पूछना चाहिए था बट ये नहीं पूछ रहा। सो लेट्स सी, नो,
नाउ इसने जो डिस्प्ले भी किया है वो इसके बगैर किया है, कि दैट मीन्स कि बुक के जो प्राइवेट डाटा मेंबर है पेजेस उसको डिस्प्ले नहीं किया, ना ही वो इनपुट लिया, और इसी तरह से ड्यूरेशन जो प्राइवेट डाटा मेंबर था टेप का उसको भी डिस्प्ले नहीं किया और उसको इनपुट भी नहीं लिया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया था बुक का, उसका एड्रेस स्टोर कर दिया पॉइंटर में, पॉइंटर की टाइप क्या पब्लिकेशन। अब पब्लिकेशन क्लास में वी शुड हैव these two functions virtual in order to execute, ये जो get data है ये execute कर सके किसका, उस ऑब्जेक्ट का जिसका एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर है। ठीक है, सो अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की टाइप देख के get data उसी क्लास का एग्जीक्यूट किया जाए, then we have to make get data function virtual in the publication class in the base class. Similarly, if we want कि ये जो ptr पॉइंटर है ये जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी में अगर बुक का ऑब्जेक्ट है तो पुट डाटा बुक का एग्जीक्यूट हो, अगर ये ptr ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है टेप ऑब्जेक्ट को, the put data function of the tape class should be executed. For that these two functions should be virtual. So get data और book data publication class में virtual होंगे. So this is a publication class. Now let's make these functions virtual. So now we make these two functions virtual. Okay, now let's compile and execute. Okay, enter data for book. Let's have b के enter किया. Okay, enter number of pages. So it won't ask for the title now. टाइटल के बारे में नहीं पूछ रहा और ना ही ये प्राइस के बारे में पूछ रहा है। पेजेस आर 500, यस, टेप, एंटर ड्यूरेशन। सेम इज द केस विद द टेप ऑब्जेक्ट। So we have the same problem with the tape object as well, that it just asks to input duration but it won't ask to input the title and the price of the tape. ठीक है, so यहाँ पर होना ही चाहिए था कि वो प्राइस भी पूछे टाइटल भी पूछे। So let's input duration, that is let's say 75 minutes. Do you want to add another record? No. Okay, display something. So pages, title, price. So pages उसने प्रिंट कर दिए, टाइटल एंड प्राइस। तो कुछ सही आउटपुट में इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं की, इट शुड प्रिंट के पेजेस और ड्यूरेशन भी इसको प्रिंट करनी चाहिए थी। ठीक है, सो लेट्स गो टू द कोड एंड चेक अगेन। सो टेप का जो पुट डाटा का फंक्शन है उसमें ड्यूरेशन है और ड्यूरेशन उससे प्रिंट करना चाहिए था, उसने ड्यूरेशन प्रिंट नहीं किया। एंड द अदर थिंग, इट वोंट आस्क फॉर द टाइटल एंड द प्राइस फॉर बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज वाई, बिकॉज जब हमने गेट डाटा फंक्शन, वी हैव मेक द गेट डाटा फंक्शन वर्चुअल इन द बेस क्लास जो पब्लिकेशन क्लास है। सो जब बेस क्लास में हमने इसको वर्चुअल बना दिया है तो अब वो बेस क्लास का गेट डाटा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, गेट डाटा फंक्शन उसी ऑब्जेक्ट का एग्जीक्यूट होगा जिस ऑब्जेक्ट को ये जो पॉइंटर है ये पॉइंट कर रहा होगा। सो ये जो पॉइंटर है इधर इट इज पॉइंटिंग टू द टेप ऑब्जेक्ट और द बुक ऑब्जेक्ट। सो गेट डाटा फंक्शन is either executed of the book object or of the tape object. So जो book object का get data function है that is this one. ठीक है, so यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि we can make something like we can call the get data function of the publication first। हम पब्लिकेशन का गेट डाटा फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद ये फिर एंटर पेजेस एट द एंड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से टेप क्लास में भी हम सबसे पहले पब्लिकेशन क्लास का गेट डाटा फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, पब्लिकेशन गेट डाटा के, और पुट डाटा में भी सबसे पहले हम इसी तरह से पब्लिकेशन क्लास का पुट डाटा फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, पब्लिकेशन पुट डाटा
और हम ये भी कर सकते हैं कि वी कैन मेक द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ द पब्लिकेशन क्लास, ये जो प्राइवेट डाटा मेंबर है इसको हम प्रोटेक्टेड कर सकते हैं सो दैट द ड्राइव क्लास कैन एक्सेस दोज प्राइवेट डाटा मेंबर। ठीक है, इनको प्रोटेक्टेड रख सकते हैं और यहाँ पर इनपुट ले सकते हैं इनकी। ठीक है, सी आउट सी इन, सी आउट सी इन। ये जो सी आउट सी इन है इसको हम गेट डाटा फंक्शन जो आ रहा है बुक क्लास में उसमें भी रख सकते हैं, और गेट डाटा फंक्शन जो मेन में आ रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पे भी इनको लिख सकते हैं। बट लेट्स राइट लाइक दिस कि हम बुक क्लास से पब्लिकेशन क्लास का गेट डाटा फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बुक क्लास के गेट डाटा से। इसी तरह से टेप क्लास के गेट डाटा से वी आर एग्जीक्यूटिंग द पब्लिकेशन क्लास का पुट डाटा फंक्शन पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी whether this approach works or not। कंपाइल किया हमने प्रोग्राम को एंड देन एग्जीक्यूट किया, एंटर बुक और टेप रिकॉर्ड। सो लेट्स से बुक रिकॉर्ड हमने पहले एंटर करना है। नाउ इट आस्क्स फॉर द टाइटल, बिकॉज बुक का जो गेट डाटा फंक्शन था वहाँ पर सबसे पहले जो हमने फंक्शन कॉल किया दैट इज़ पब्लिकेशन का गेट डाटा फंक्शन कॉल किया, जो बेस क्लास है उसका गेट डाटा फंक्शन कॉल किया है। सो एंटर टाइटल, let us see enterprise price is let's say 500.75, pages are 450 let's say. Do you want to add another record? Yes. So enter book or tape record. Let's say tape record, enter title, C++ programming, price is let's say 650.50 and duration is let's say 700 minutes. Okay, do you want to add another record? So हमने एक बुक का रिकॉर्ड एंटर कर लिया, एक टेप का रिकॉर्ड एंटर कर लिया। नो सो हमने नो प्रेस किया, यहाँ से टाइटल प्रिंट किया इसने बुक का, प्राइस प्रिंट की, पेजेस प्रिंट कर दिए। टाइटल प्रिंट किया, प्राइस प्रिंट की और ड्यूरेशन प्रिंट नहीं की इसने, टेप ऑब्जेक्ट की। इट शुड प्रिंट द ड्यूरेशन ऑफ द टेप ऑब्जेक्ट, दैट इज मिसिंग ओवर हियर। ओके, बुक का रिकॉर्ड तो सही आ रहा है, टेप के रिकॉर्ड में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स गो टू द कोड एंड सी। So let's go to the code and see why the duration is not printing for the tape object. So that is the tape class. tape class में हमने duration इस तरह से print कर रहे हैं, but book का object, tape का object, okay, count प्लस प्लस भी हो रहा है यहाँ पर। So हम यहाँ पर एक सी आउट प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं जिससे पता चलेगा क्या वाकई ही इसका टेप क्लास का पुट डाटा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो एस कंपाइल एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। लेट्स से टेप का रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, एंटर टाइटल C++ प्रोग्रामिंग, प्राइस इज 500, ड्यूरेशन इज 340, नो। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि पुट डाटा जो है वो टेप क्लास का एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, राइट। ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, राइट। virtual function है put data। okay, this is with small d, that is the mistake। so ये यहाँ पर small d के साथ है। so put data function जो है वो बेस क्लास में कैपिटल डी के साथ है, बट हमने यहाँ पे ड्राइव क्लास के साथ मिस्टेकनली स्मॉल डी के साथ ही था। सो लेट्स मेक इट कैप्स। अब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट्स कमेंट आउट दिस स्टेटमेंट। अब हम इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो टेप रिकॉर्ड C++
programming. Price is 675.5. Duration is 300. Add another record, yes. Book record. Title of the book is Let Us See. Price is, let's say, 650.4. Pages are 750. Do you want to add another record? Let's say no. So हमने नो एंटर कर दिया. अब इसने प्रिंट कर दिया टाइटल C++ प्रोग्रामिंग है. प्राइस 670.5 है, 675.5 है. ड्यूरेशन इज 300. राइट, सो दिस इज द रिकॉर्ड फॉर द टेप एंड दिस इज द रिकॉर्ड फॉर द बुक. ठीक है. सो in this example program we achieve the polymorphic behavior by making the member function of the base class virtual and सब virtual बना दिए. तो अब जो member base class का जो pointer है, हमने base class के दो member function को virtual बना दिया है. So अब base class का जो pointer है that is pointing to the object of some drive class. So जिस drive class के object को point कर रहा है वो उसी drive class का particular function execute करेगा. For example put data या get data, जो भी function हमने virtual बनाया है. अगर हम किसी function को virtual नहीं बनाएंगे तो वो base class के function को ही execute करेगा सिर्फ. ठीक है. Okay, now let's go back to the slide and let's write the example program 2. So in a distance class, create an overloaded static operator so that two distance can be multiplied together. Make it a friend function so that you can use such expression as this one. Okay. So dest1 is an object of a distance class. 7.5 is, let's say, distance in meter, and multiply by dest2 object. dest2 object में हमारे पास feet और inches है and we want to execute this statement. इस statement को execution के लिए हमें overloaded जो static operator है उसको friend function बनाना पड़ेगा distance class का. ठीक है. सबसे पहले हम friend बनाए बगैर देखेंगे. When we write the code, if it executes successfully then we make it a friend function. तो जब भी आप फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे तो फ्रेंड फंक्शन अगर मेंबर कोई भी फंक्शन है, इफ़ यू वांट टू मेक दैट फंक्शन अ फ्रेंड फंक्शन, अगर मेंबर फंक्शन में आप एक पैरामीटर पास कर रहे हैं एंड उसका जो फ्रेंड वर्जन होगा उसमें दो पैरामीटर पास करेंगे. राइट, बिकॉज अगर एक पैरामीटर आप मेंबर फंक्शन में पास करेंगे द अदर पैरामीटर इज बेसिकली द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट. इफ यू मेक दैट फंक्शन और कन्वर्ट दैट फंक्शन इनटू अ फ्रेंड फंक्शन देन दोनों जो इन्वोकिंग है और दूसरा जो एज ए पैरामीटर पास होता है वो दोनों के दोनों एज ए पैरामीटर पास होंगे फ्रेंड फंक्शन को. दैट इज़ द रूल. अगर मेंबर फंक्शन है उसमें आप दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, जब उसका फ्रेंड वर्जन बनाएंगे तो उसके तीन पैरामीटर पास होंगे. सो राइट अ मेन प्रोग्राम टू टेस्ट दिस ऑपरेटर. So let's go and write the program. In this program we will write a simple distance class first, जिसमें एक feet इसका प्राइवेट डेटा मेंबर होगा, एक इंचेस होगा, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्गुमेंट होगा, एक शो टेस्ट फंक्शन हम बना लेंगे एंड देन वी मेक अ फंक्शन ऑपरेटर स्टैटिक फंक्शन. और इस तरह की एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जिसमें एक ये सिंगल पैरामीटर आ रहा है वी मस्ट हैव अ वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एज वेल इन द क्लास. ठीक है, एक सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए. सो लेट्स गो एंड राइट द प्रोग्राम. Start with include. Class distance. The true private data member of the distance class are int feet and float inches, and the public function are, the first one is the default constructor, inches 0, so that is the, this should be 0 not a small o, 0. Then we have
a constructor with 2 argument. फीट को हमने f से इनिशियलाइज कर दिया और इंचेस को हमने I से इनिशियलाइज कर दिया. And then we have a constructor with 1 argument, that is float mtrs meters, जो डिस्टेंस होगा. अच्छा मीटर्स, सो एक आई थिंक 1 मीटर में 3.28 फीट्स होते हैं, राइट. सो फर्स्ट वी हैव अ फ्लोट f mtrs multiply by 3.28, देन फीट में हमारे पास इसका f का फीट पार्ट आ जाएगा, इंट पार्ट आ जाएगा, ठीक है. सो अगर f में हमारे पास वैल्यू आ रही है 5.75, तो फीट में हमारे पास 5 आ जाएगा, 0.75 सेपरेट नहीं होगा. सो फीट से 5 अलग होके, सॉरी f में अगर वैल्यू हमारे पास है 5.75, सो देन विद दिस एक्सप्रेशन, सिंस फीट की जो टाइप है वो इंट है, आप असाइन क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. सो इसमें लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी. जो डेसिमल वैल्यूज है दैट विल नॉट बी असाइन टू फीट, ओनली द इंटीजर पार्ट इज असाइन टू फीट. सो f का जो इंटीजर पार्ट है दैट इज 5, वो असाइन हो जाएगा फीट को, ठीक है. सो f में वैल्यू क्या है हमारे पास, f में स्टिल वैल्यू 5.75 रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. फीट में क्या आ गया, 5 आ गया हमारे पास. नाउ इफ यू राइट f माइनस फीट, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो चीज़ हमें देगी दैट इज़ 0.75, जो डेसिमल वाला है फीट में. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो इंचेस में आ जाएगी, राइट. सो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड. सो हम फीट को इंचेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वी हैव टू डिवाइड दैट वैल्यू, ठीक है. सो हम हमारे पास फीट है, ये वैल्यू हमारे पास फीट में है, इसको हम इंचेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट वैल्यू. सो हम बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई. व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट इंचेस इनटू फीट, देन वी हैव टू डिवाइड द इंचेस बाय 12, राइट. सो यहाँ पर दैट इज़ अ 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, सो दैट विल मेक इट पॉसिबल टू कन्वर्ट दैट 7.5 इन द एक्सप्रेशन, प्रीवियस एक्सप्रेशन जिसको हमने देखा था, डेस्ट 1 इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाय डेस्ट 3. So first it will convert 7.5 into a distance object using 1 argument constructor. So 1 argument constructor इसमें केस में must है. And then we have a void show dest function, जो कि फीट और इंचेस को डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पर. सी आउट फीट इज इक्वल टू फीट and inches is equal to inches and end line, right. Okay, then we want to write that overloaded function, operator static, so this is the operator static function that is used to overload the static operator for a distance object. The return type of that function is a distance object, ठीक है. वो distance object by value return करेगा. Now what that function will do, इसमें जो एक पैरामीटर है जो कि इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेटमेंट आती है इस तरह से, d1 इज इक्वल टू d3 मल्टीप्लाई बाय d2, राइट. सो d3 के जो पैरामीटर है फीट और इंचेस, दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल. सो व्हाट वी डू इज वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिस्टेंस क्लास, अ टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, temp dot feet is equal to feet मल्टीप्लाई बाय, ये जो फीट हैं किसके हैं, ये d3 के फीट्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय
the other parameter will be passed to this function as a parameter. ठीक है, so ये बाइनरी ऑपरेटर है. बाइनरी ऑपरेटर में जब भी आएगा उसमें एक ऑपरेंड जो लेफ्ट साइड पे अपीयर हो रहा है दैट विल बिकम द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट, एंड द ऑपरेंड दैट इज अपीयरिंग ऑन द राइट साइड ऑफ दैट ऑपरेटर दैट विल बी पास टू दैट ऑपरेटर स्टैटिक फंक्शन एज अ पैरामीटर. सो इसमें d2 जो है वो एज ए पैरामीटर पास होगा. डिस्टेंस d हम कर लेते हैं. नाउ d डॉट फीट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. Then temp dot inches is equal to inches multiply by d dot inches. So inches को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. d3 के इंचेस को d2 के इंचेस से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, and then we can check if inches is, so we have to make a loop over here while inches is greater than or equal to 12. So what we have to do, we have to temp dot inches minus equal 12. So 12 इससे माइनस कर देंगे and temp dot feet में प्लस प्लस कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, right? And then that function return temp, and then that temp will be assigned to d1. So ये जो expression आपके पास है ये आपके पास main में होगी, right? That's it. Okay, now let's write the main function. Main. Okay, now we create an object distance d1. Let's say 2 feet and 3 inches. Distance. So हमने इसको चेक करना है, इसको छोटी वैल्यू असाइन कर रहे हैं. 4 feet and 3 inches. 4 inches. Let's say 3 inches. ठीक है, so अब जब डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3s are 9, 4 2s are 8. Distance d3, and then d3 is equal to d1 multiply by d2, and then d3 dot show dist. ये फंक्शन हमने कॉल कर लिया जो कि इसका रिजल्ट को प्रिंट कर देगा, मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को. दैट शुड बी फीट फीट से मल्टीप्लाई होंगे. 4 2s are 8, इंचेस इंचेस से, 3 3s are 9. सो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. इंचेस ग्रेटर देन इक्वल 12, सो टेम्प रिटर्न कर देगा और हमारे पास d3 में जो फीट होंगे वो 8 और 9 इंचेस आ जाएंगे. लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट. कंपाइल दैट प्रोग्राम फर्स्ट. Okay, then execute it. Okay, let me change the screen setting. Okay, so 8 feet and 9 inches, perfectly fine. So let's say if I change it to 4, so 4 is a 12. ठीक है, so अब हमारे पास आएगा 9 feet आएगा and 0 inches, right? Compile and execute it. So 8 feet and 12 inches. This means के let me write cout over here to ensure that this function is executed. Operator static end line. So इंचेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 12. So this condition is true. जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये इंचेस में से माइनस करेगा 12, फीट में प्लस होगा, फीट की वैल्यू 9 हो जानी चाहिए. Let's compile and execute it again. Compile it first and execute it then. So उसने वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर लिया. फीट की वैल्यू 8 है, इंचेस की वैल्यू 12 है. सो 12 इंचेस शो नहीं करने चाहिए. से इज इक्वल टू
temp dot inches minus 12. So let's check वो इस while loop में आ रहा है या नहीं आ रहा. In while end line. So ये चेक पॉइंट्स आप खुद बना सकते हैं. That is manual debugging, right? तो चेक कि वो while loop में आ रहा है कि नहीं आ रहा. If आ रहा है तो वो मैसेज डिस्प्ले कर देगा in while. ठीक है, फीड में क्या ऐड हो रहा है. So while loop में वो एंटर नहीं हो रहा. अच्छा, so if temp dot inches, it should be like this. ठीक है, so हमने temp के इंचेस को चेक करना है ना, इंचेस को चेक नहीं करना. जो temp ऑब्जेक्ट है, जो हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें इंचेस मल्टीप्लाई होके आए हैं, उसके इंचेस को चेक करना था यहाँ पर. Okay, we did it. Now we should remove this. Let's compile it, execute it. Now this is 9 feet and 0 inches. ठीक है, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है. Okay, because this is 2 4s are 8 and 3 4s are 12 inches. 12 inches है तो वो 1 फीट बन जाता है, तो फीट में एक ऐड कर देगा और इंचेस की वैल्यू 0 हो जाएगी. Now it is working perfectly fine. So if we write something like 2 over here, let's say 2.5, then it gives an error, no match for the operator, some value multiply by d2. ठीक है, no match for the operator 2.5 multiply by d2. इसका मैच इसके पास नहीं है. ठीक है, but we can write something d2 multiply by 2.5. I think that should work. Yes, because इस केस में अब वो 2.5 को सबसे पहले कन्वर्ट करेगा यूजिंग अ वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के साथ, इनटू फीट एंड इंचेस. ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए. सो लेट्स से मेरे पास एक और D3 में वैल्यू 2.5 है. D3 को 2.5 से इनिशियलाइज कर दिया. D3 के डॉट शो डेस्ट करें तो अब वो D3 को फीट और इंचेस में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेंगे कि कौन से फीट और इंचेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिकॉज 2.5 जो वो एज ए मीटर है लेगा. तो इसको फीट और इंचेस में कन्वर्ट करेगा, देन मल्टीप्लाई करेगा D2 के साथ, देन वी सी द रिजल्ट ऑफ D3. ठीक है, so 8 feet and 2.4 inches. So 8 feet and 2.4 inches, that is the value of 2.5 meters. 2.5 meter is 8 feet and 2.4 inches. So अब जब ये मल्टीप्लाई होगा D2 के साथ, सो 8 इंटू 4 32 फीट हो जाएंगे हमारे पास. ठीक है, एंड 2.4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 9.599. ठीक है, so that is this value. Now in order if we want to execute, let's say this is D1, compile and execute it. Okay, 8 multiplied by 4, sorry 8 multiplied by 2 now is 16 हमारे पास आउटपुट में आ गया है. बिकॉज हम ये जो फीट और इंचेस है ये 2.4 मीटर की कन्वर्जन है, 2.5 मीटर्स की कन्वर्जन है, 8 फीट एंड 2.4 इंचेस. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज हम D1 को मल्टीप्लाई करें 2.5 मीटर के साथ, तो 2.5 मीटर को पहले फीट और इंचेस में कन्वर्ट करेगा, जिसकी कन्वर्जन मैंने पहले ही करके इसको प्रिंट कर लिया है, 8 फीट एंड 2.4 इंचेस. सो व्हाट इट विल डू इज 2 मल्टीप्लाई बाय 8 फीट, that is 16 feet, and 2 multiplied by 2.4 is 7.199. ठीक है, so in order to execute a statement like D3 is equal to 2.5 multiplied by D1, so हम इस तरह की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं. अगर इसको कंपाइल करें it won't allow us. For that we have to make this function a friend function.
सो क्लास को हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया और ये जो फंक्शन है इसको हमें फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा. सो वी हैव टू डिक्लेयर दैट फंक्शन इनसाइड द क्लास दैट d1 comma distance d2 and this is the friend function. By using the keyword we make that function friend. ठीक है. So d1 comma distance d2. ठीक है. So अब हमारे पास ये जो d2 d1 dot feet d1 dot inches d2 dot inches. ठीक है. That's it. Now if we compile it, now what it does, it will convert this object, this 2.5 value, floating point value, into a distance object by calling a default constructor. Then that object is multiplied with d2 और इसमें ये friend function invoke हो जाएगा. ठीक है. जिसमें हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं. So d1 पैरामीटर d2 पैरामीटर. So इस स्टैटिक ऑपरेटर के जो लेफ्ट ऑपरेंड है जिसको कन्वर्ट कर लिया डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में, पहले डिस्टेंस बाय कॉलिंग वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर दैट विल बी पास टू दिस फंक्शन एज द फर्स्ट पैरामीटर एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट साइड ऑफ दैट ऑपरेटर d1 दैट विल बी पास टू दिस फंक्शन एज अ सेकंड पैरामीटर. ठीक है. सो अगर आप इसको रन करके देखें 2.5 की कन्वर्जन है 8 फीट एंड 2.4 इंचेस और इस 2.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं d1 के साथ जिसके 2 फीट और 2 इंचेस हैं. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2.4 इज 7.9199. राइट. सो फ्रेंड फंक्शन, जब भी मेंबर फंक्शन को आपने फ्रेंड फंक्शन बनाना होगा यू मस्ट हैव वन प्लस आर्गूमेंट देन द मेंबर फंक्शन. अगर वो मेंबर फंक्शन है उसमें एक आर्गूमेंट पास हो रहा है तो जब उसका फ्रेंड वर्जन बनाएंगे तो उसमें दो आर्गूमेंट पास होंगे. मेंबर फंक्शन है उसमें दो आर्गूमेंट पास हो रहे हैं. इफ़ यू क्रिएट अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ फ्रेंड वर्जन ऑफ दैट फंक्शन देन उसमें 3 आर्गूमेंट्स पास होंगे. राइट. बिकॉज मेंबर जो फ्रेंड फंक्शन है उसमें कोई इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट नहीं होता. राइट. सो दैट इज़ द एंड ऑफ अवर टुडेज़ लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने 2 एग्जाम्पल प्रोग्राम्स बनाए, उसको डिटेल के साथ देखा. वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल एंड देन वी ट्राई टू इम्प्रूव इट इन ऑर्डर टू अचीव कि हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की उसको फुलफिल कर सकें. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.